Okay, assalamu alaikum everyone. We're just starting in a minute. Just starting in a minute. Okay, so October, November 2018. It's paper 2, variant 2. So let's start with this. Okay, so we have the first question here. Kamal earned a total of 32,500 in 2017. He paid 9% of this amount into his pension and 22% tax on the remainder of his earnings. So बाकी जो बच गया उसके ऊपर he paid 22% tax. Now, based on this information, we are supposed to calculate the amount left after paying his pension and his tax. Okay, so basically उसने क्या किया? उसने उसके पास ये amount थी पहले 32,500, right? It started with 32,500. अब इसमें से कितना पे कर दिया पेंशन को? 9%. 9% पेंशन को पे कर दिया तो बाकी कितना बचा? After this point 91% बाकी बच गया, है ना? 100% total था पहले, so this was the 100%. After paying 9% into pension, he's left with 91%. तो आप उसको क्या करोगे? उसको multiply कर दोगे 0.91 के साथ. So this is the amount that is left after pension. ठीक है? अच्छा, ये जो amount रह गई उसके ऊपर क्या किया फिर इसने? He paid 22% tax. So इस amount को, whatever was the total amount here, you reduce it further by 22%. हमने क्या कहा था? इस तरह से reduce करेंगे. We say we multiply this by 0.78, right? 22% से decrease करना है ना? तो यानी कि 100% minus 22%, that gives you 78%. तो अब इसको multiply कर दोगे किसके साथ? 0.78 के साथ, and that will give you the result. This will give you the final the amount left after doing both of these things. So पहले हमने क्या किया? 0.91% पे लेकर आए, 9% reduce किया, that will give us some result. This result को हमने 22% और reduce कर दिया, so multiplied by 0.78 more. Just evaluate this at 32,500 into 0.91 into 0.78. And that gives us 23,000. 23,068. Yeah, very good. So $23,068.5. So that's the amount that is left. $23,068.5. Okay. So now it says Kamal invested $1,200 in a savings account, paying 1.8% per year compound interest. Compound interest की बात हो रही है per year है. He left the money in the account for 5 years. So 5 years जो है वो amount वहाँ पे पड़ी. Calculate the amount of money in the account at the end of 5 years. Give your answer correct to the nearest cent. Okay, so remember the formula we used to have for that. So we said whatever is our principal amount, जो हमारे पास principal amount है, इसको हम multiply करेंगे किसके साथ? 1 plus this percentage
1.8 divided by 100 और raised to power ये आपके पास जो n होगा that is 5, right? So basically if you remember the formula, we should write something like this: principal into 1 plus whatever is your interest rate divided by 100 and raised to power n, where n is the number of years that you have, the number of periods that you're considered. ठीक है, आप इसको क्या करोगे? अब आपके पास यहाँ से क्या है? This is going to be the final amount, by the way. So the final amount after all that time is equal to the principal multiplied by this thing. Okay, so that principal is 1200 multiplied by 1 plus 1.8 divided by 100. That's just 0.018. बस यहाँ पर आ जाएगा 1.018 whole raised to power 5. Just evaluate this and you see what you get from that. That's 1200 multiplied by 1.018 raised to power 5, and that gives us 1311. ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है 1311.96. उसने टू द नियरेस्ट सेंट का हुआ है ना. नियरेस्ट सेंट का क्या मतलब है? आपके पास ये डॉलर्स है तो हर डॉलर के अंदर 100 सेंट्स होते हैं. नियरेस्ट सेंट का मतलब है आपको देना है आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1 and 2. डॉलर्स में है ना, तो डॉलर के अंदर क्योंकि 100 सेंट्स होते हैं, ये 2 डिजिट्स पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. आपका एक सेंट जो होगा दैट इज 0.01, दैट इज 1 सेंट. तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक बेसिकली आंसर देना है, एंड दैट्स द रिजल्ट हियर, दैट इज 1311.96. Okay, is this clear to everyone? Any issues with this? Any problems with this? You clear it? Okay, good. Let's move on. Then you have part C of this. Kamal also invested some money in a different savings account for 5 years. Now, this account paid 2.1% per year simple interest. Okay, simple interest का क्या formula होता था? इसका हमारे पास interest का formula होता था PRT, whatever was the principal into the rate into the time. So at the end of 5 years, there was this much amount in the account. Calculate the amount of money he invested in the account. Let's calculate the amount of money he invested in the account. Okay. Now, we don't know what the initial amount was. Initial amount नहीं पता, ठीक है? Initial amount नहीं पता. हमें क्या पता है? हमें पता है कि final amount कितनी थी. This was the final amount. ठीक है? Whatever was the principal amount जो भी थी वो हमें figure out करनी है. So invested amount, money invested, let's call that the principal. ये हमें figure out करना है. We don't know what that is. Principal में आप interest total add कर लो, whatever was the interest. तो ये जो total amount बनती है हमारे पास, that is equal to 828.75. 828.75. Does that make sense? So उसने कुछ amount पहले invest की, whatever that was, उसमें जो total interest हुआ 5 years का, उसको add किया, the total turned out to be 828.75. ठीक है? अब interest का क्या relationship है हमारे पास? Interest is PRT, so that's PR into T, that is 828.75. ठीक है? अब यहाँ पे values input कर दें. Principal amount आपको नहीं पता, लेकिन आपको rate पता है. Rate क्या है? 2.1%, so that's 2.1% multiplied by the time. The time is 5 years, so multiplied by 5. That's equal to 828.75. अच्छा, आप लोगों ने शायद इस तरह भी देखा होगा इसको, PRT over 100. You can also do that. अगर आप सिर्फ rate को 2.1 डालते हो, then you have over 100 here. अगर आप पूरा percentage terms में डाल देते हो,
You can just put it like this because 2.1% का क्या मतलब है? It's 2.1 divided by 100. So it's the same thing. इसको आप इस तरह लिखना चाहते हो वो भी कर सकते हो. PRT over 100 if you're more comfortable with that. So that's also fine. You would say this is P into R. Rate यहाँ पे 2.1 था. Let's use that. PRT over 100 कर लें. यहाँ पे हमारे पास होगा 2.1 divided by 100. Right now you just simplify this. तब बस P की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है? Is this clear to everyone? Any issues with this? So simplify कर लेते हैं. P plus 2.15 divided by 100. That is 0.1 P. That's equal to 828.75. यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.1 P is equal to 828.75 और P की वैल्यू आ जाएगी फिर 828.75 divided by 1.1 and that is 753.41. 753.41. That is the amount that we get from that. All right. So this is what we have. Okay, now let's move on. So the exchange rate between dollars and pounds is $1 to 0.72 pounds. Exchange rate between dollars and euros is $1 to 1.1 euros. Now, Kamal has $275. Suppose it's $10. He changes part of $275 into pounds and receives 79.2 pounds. कुछ part उसने इसमें receive उसमें change कर लिया. He changes the remaining dollars into euros. Calculate the amount he receives in euros. Okay, so the total here is $275. So dollars में हमारे पास कितनी amount थी? Dollars में हमारी total amount was $275. This is the total amount that we have. Okay. Now, some of this is converted into pounds. 79.2 pounds. हम ये देख लेते हैं कि कितने डॉलर्स ये बनते हैं, यानी कि 275 में से कितने डॉलर हमने कन्वर्ट कर लिए पाउंड्स के अंदर. So how do you figure that out? We know that $1 is equal to कितने pounds? 0.72. I don't know how to make that something like this. 0.72 pounds. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे रेशियो है. आपको क्या निकालना है? You know, आपको देखना है कि ये कितने पाउंड्स होते हैं. That is 79.2 pounds. ये कितने होते हैं? ठीक है, this is what you do not know about. आप रेशियो से ये कर लोगे. ये क्या आएगा? You cross multiply, right? So you get 79.2. 1 into 79.2, that is equal to 0.72 times x. और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाए. ये कितने डॉलर्स आपने पाउंड्स में कन्वर्ट किए. ओके, बिकॉज ये रेशियो सेम होनी चाहिए. जब $1 to 0.72 pounds, अब उसने 79.2 pounds आपको दिया हुआ है, तो कितने डॉलर्स बनेंगे? Figure that out using simple ratios. So that turns out to be 79.2 divided by 0.72, and that is $110. 110. तो बेसिकली 275 में से $110 जो है उसने क्या किया है? पाउंड में कन्वर्ट कर दिया. What are you left with? You're left with $165. अब ये $165 उसने क्या किया? फिर उसको यूरोस में कन्वर्ट किया. अब यूरोस का कन्वर्जन रेट क्या है? That's given like this. $1 is equal to 1.1 euros. आपके पास कितने डॉलर्स हैं? You've got $165. तो ये कितने यूरोस होने चाहिए? अब ये तो सिंपली आप 1.10 से 165 को मल्टीप्लाई कर दो. You get this much euros, this many euros. ठीक है, या कुछ रिजल्ट आ जाएगा 165 into 1.1, 165 into 1.1. इसको भी आप रेशियो से करना चाहते हो उससे कर लो. You will get the same result, that is 181.5 euros. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि काफी क्लियर था. We know कि $1 is equal to 1.1 euros. $165 कितने होंगे?
that is just going to be 1.1 multiplied by this 165. ठीक है, उस तरह फिर इसको आप उस तरह भी करना चाहते हो, you say this is euros here. We don't know what that value is, so let's call this something else. Let's call this y. आपको figure out करना है, इसका ratio से करते हैं, फिर you cross multiply. What do you get from that? You get y equal to 165 into 1.1. That's going to be 181.5. ठीक है, तो ये आपके इतने यूरोस बन गए 181.5 यूरोस. Is that okay? Is this clear? Does this make sense? Yes, sir. Okay, good. Let's move on. Let's look at question number 2. It says Lim grows tomatoes. The masses of 200 of her tomatoes are recorded. The cumulative frequency curve, the cumulative frequency table below shows the results of your table is each hour, and as you have cumulative frequencies in this, and you've got masses or intervals. So there are 200 total tomatoes. So total जो है आपके पास आपको नजर आ रहा है एंड के ऊपर, total is 200, and we have to draw a cumulative frequency diagram to represent these results. Okay, so we have to draw that diagram. We have to plot these points. X-axis पे क्या होएगा? On the x-axis we've got the mass. On the y-axis we've got cumulative frequencies. We just need to plot these now. 80 के ऊपर 0. X-axis के ऊपर 80 पे 0. So you've got this point here. Okay. Then you have 100, 20. 100 के ऊपर you've got 20. 110, 48. 110, 48. So you can see here you've got 5 boxes. 5 boxes represent 20. So every small box is going to represent 4 units on the vertical axis. Horizontally जो है, every small box represents 2 units. ठीक है, तो आप एक पहले से एक बार उसको देख लिया करें कि vertically क्या छोटा box represent करे 4 units, horizontally 2 units is one small box. So अच्छा 110 के ऊपर you've got 48. 120 पे you've got 112. 120 is 112. That's going to be here. 130, 158. 130 पे you've got 158. That is right here. 140 पे 184. That's right here. And 160 by 200, so that's that point at the top corner. So this is these are the values that you have. Okay. Now what do we do now? We just draw this curve. This curve को draw करते हैं. It's a cumulative frequency curve that we have to draw. So it's going to look like this. Try to make it as smooth as you can. You have to make sure you're doing it with a pencil. If you need to erase something, you have the chance to do that. Oh. So this is what it looks like for me. Okay, so this is my cumulative frequency curve. So this is what we were required to draw there. अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं? Use your diagram to estimate the median. अब maximum amount क्या है? 200. तो 200 का half कर लेते हैं. 200 divided by 2. That gives us 100. 100 के against हमारे पास क्या value आ रही है? We will read that on the diagram. Okay, 100 पे जाके हम देखेंगे diagram पे क्या amount आती है. So I'm getting some point at somewhere around here. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं x-axis के ऊपर this point is 190. ठीक है, 18 और 20 के दरम्यान में, so that's 119 on the x-axis. That is my median. So I say this is 119. Okay. अच्छा, then it says interquartile range. Interquartile range क्या होती है? It's the upper quartile minus the lower quartile. ठीक है, upper quartile कैसे find करते थे? Upper quartile के लिए
we have this total here, whatever is the total amount, 200 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर 75% फाइंड कर लें, इट्स द सेम थिंग, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप कह सकते हैं 200 का 75% कैलकुलेट कर दें, राइट, that will give you 150 in this case. Similarly, you do for the lower quartile, this is what you do for the upper quartile. Lower quartile के लिए क्या करते हो? You multiply 200 by 1/4, or you can say you multiply 200 by 25%. So 25% से multiply कर दें या 1/4 से multiply कर दें, you get this amount here, that is going to be 50. तो आपने क्या करना है? ग्राफ पे जाना है, 50 के ऊपर देखना क्या वैल्यू आती है आपके पास, और आपने देखना है 150 पे क्या वैल्यू आती है. So this is 150 here, right? So this is 150 and this is 50. दोनों के ऊपर वैल्यूज देख लें तो 50 के ऊपर I have somewhere around 111, right? Because 48 पे 110 था, so 50 के ऊपर somewhere around 111. So I've got the lower quartile 111. ठीक है, ये value is 111. And similarly, I see what I have against 150. 150 के ऊपर क्या आता है? That's this number here. ठीक है, ये number भी जाके नीचे देखते हैं, नीचे क्या है? That is somewhere here, right? And this is 127. So the upper quartile is 127. Upper quartile में से lower quartile subtract कर दिया, 127 minus 111, and that will give you the result. That's 16. Our interquartile range here is 16. ठीक है, clear है? Is this clear to everyone? Okay, good. Let's look at the next part. Then it says Ravi also grows tomatoes. Okay, so Ravi also grows tomatoes. The masses of 200 of his tomatoes are also recorded. For Ravi's tomatoes, the median mass was 124 grams, and the interquartile range of the masses was 12 grams. Make 2 comments comparing the masses grown by Lim with those grown by Ravi. Okay. अब देखिए रवि के बारे में लिम पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, पहला कॉन्सेप्ट उसका नाम क्या था? that was lim, the first part. So lim पे we have the median, इसका जो median था lim का, that was 119. Median for lim was 119. Interquartile range for lim was 16 grams. Interquartile range was 16 grams. Okay. अच्छा, ये median क्या बताता है कि on average, so median is a measure of average, right? Central tendency की measure है कि तकरीब on average आपके पास कितने जो है masses आ रहे हैं. ठीक है, so आप यहाँ पे एक आप क्या कहोगे? On average, you can say on average जो आपके रवि के टोमेटोज हैं उनका मास 124 है, जो लिम के टोमेटोज हैं उनका मास ऑन एवरेज 119 है. So you can say on average Ravi's tomatoes have a higher mass. So that's one comment that we have. ठीक है, Ravi's tomatoes have a higher mass or Lim's tomatoes have a lower mass, you know, anything like that. Then you look at this the spread in the data. Interquartile range आपको बताता है कि डेटा आपका कितना spread out है, कितनी वेरिएशन है. ठीक है, कितनी वेरिएशन है आपके डेटा के अंदर. So interquartile range लिम की 16, लिम के टोमेटोज की 16 ग्राम थी और रवि के टोमेटोज की 12 ग्राम थे. You say वेरिएशन ऑफ masses, ये आपको वेरिएशन बताते हैं कितने ज्यादा masses जो हैं वो वेरी कर रहे हैं. ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है. सो वेरिएशन
in masses of Ravi's tomatoes is lower. इसमें वेरिएशन कम है, ठीक है, ये ज्यादा मैसेज एक दूसरे के करीब है. जो लेम के टोमेटोज थे उसमें वेरिएशन ज्यादा थी उनके मैसेज के अंदर, दैट वाज 16 ग्राम, सो दैट वाज हायर. तो मीडियन आपको बताते हैं कि ऑन एवरेज अब क्या चल रहा है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको बताती है कितनी वेरिएशन है आपके डेटा के. ओके, सो दैट्स व्हाट यू राइट हियर. Then it says complete the frequency table for the masses of tomatoes grown by Lynn. अब देखिए उसने ऊपर हमें cumulative frequencies दी हुई हैं. Okay, so we have the cumulative frequencies. Let me just copy that table here. So हमारे पास cumulative frequencies आ रही है यहाँ पे. Right, these are the cumulative frequencies. ठीक है. अच्छा, now let's have a look at this. आप यहाँ पे देखें 80 से नीचे तो कुछ भी नहीं है, so that's a zero. So यहाँ पे 80 से नीचे वाला कोई इंटरवल आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, there is no interval there. अच्छा, what about frequencies from 80 to 100? 100 से नीचे 20 है, तो यहाँ पे आ गया ये 20, ठीक है. 110 और 100 के दरम्यान में कितने होंगे फिर? 48 minus 20, कितना डिफरेंस आता है? That is 28. You see this number 28 here. Similarly, आप यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. 112 120 से नीचे कितने हैं टोटल? 112. और 110 से नीचे कितने हैं? 48. इन दोनों के दरमियान में कितने होंगे? 110 और 120 के दरमियान में 112 minus 48, and that will turn out to be 64. तो basically आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप when you're going back from a cumulative frequency to a normal frequency like this. ठीक है. 158 minus 112, what do you get here? 158 minus 112, 112, that is 46. So this number here should be 46. Again, 184 minus 158, what's that? That is 26. So next number होना चाहिए यहाँ पे, that should be 26. ठीक है. और फिर अगला उसने आपको 16 already दिया हुआ. Just to verify, you can check ये total आपके पास क्या आता है. The total should turn out to be 200. Just to verify, you can do that. Total 200 ही आ रहा है. अच्छा, then it says write down the model class. Model class कौन सी होती है? जिसकी frequency सबसे ज्यादा है. So इस table के अंदर कौन सी frequency सबसे ज्यादा है? That's 64. That's this interval here from 110 to 120. You say that is the model class where the interval is from 110 to 120. This is our model class. Okay. Then it says calculate an estimate for the mean mass of these tomatoes. So उसका हमारे पास कोई standard procedure होता है. So let's do that. We find the midpoints. Midpoints figure out कर लेते हैं. Let's call that x. Midpoints क्या होंगे? 90, 105, 115, 125, 135, and 150. ठीक है, midpoints आ गए. This is the frequency. We add another column there, fx. Frequency into that midpoint, 20 into 90, that's 1800. 105 into 28, that is 2950, 2940. 64 into 115, that is 7360. 46 into 125, that is 5750. 26 into 135, that's 3510. Okay, and then 16 into 150, that is 2400. ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा fx. fx का सम सिग्मा f आपको पता है, that is already 200. उन सबको ऐड करके देखते हैं. 1800 plus 2940 plus 7360 plus 5750 plus 3510 plus 2400. Sigma fx turns out to be 23760. तो आपका मीन क्या होएगा? मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? Sigma fx divided by sigma f. We just input values there. 23760 divided by 200, and that will give you the mean.
this turns out to be 118.8. So that's the mean mass there. That is 118.8. Right, so we write 118.8 here. Is this okay to everyone? Any issues? Any problems, anyone? No, sir. Okay, good. Let's move on. Expressed as a single fraction in the simplest form, so that's pretty straightforward. Of course, a fraction has to simplify करना है. इसका LCM लेंगे. LCM आपने बस इनको cross multiply कर दें. ठीक है? So what do we get? We get 3 into y plus 6 minus 5 into y minus 1. You can divide by the product of those two, y minus 1 into y plus 6. Now we need to simplify this because to simplify करते हैं न्यूमरेटर को simplify करेंगे हमारे पास क्या आएगा? We get 3y plus 18 minus 5y plus 5. ठीक है, divided by y minus 1 into y plus 6. अच्छा, डिनोमिनेटर को अभी हम ऐसे रख रहे हैं. We just want to see कि इसको हो सकता है कोई कैंसिलेशन हो जाए. अगर तो कैंसिलेशन नहीं होगी फिर डिनोमिनेटर को भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे. अगर कैंसिलेशन हो जाती है तो वैसी एक ब्रैकेट हो सकता है एलिमिनेट हो जाए. So let's simplify this further. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं. What do we get? We get minus 2y plus 23. Minus 2y plus 23. Yeah, so it turns out के कोई भी कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती. So नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं. हमारे पास आ जाएगा y square minus y plus 6y minus 6. ठीक है? And then finally what we get is minus 2y plus 23 whole divided by y square plus 5y minus 6. That is the simplified form. Okay, so this is what we have. Minus 2y plus 23 divided by y square plus 5y minus 6. This is the simplest form. आपको denominator को भी simplify करना होगा. ठीक है? That's when you will get 3 marks. तो आपको पहले brackets को बेशक इस तरह रहने दें, just to see कि कोई cancellation तो नहीं हो जाएगी. अगर cancellation नहीं possible, फिर आप denominator को भी simplify कर दो. Okay? So then it says simplify this thing. अब ये तो already कोई factorized form तो नहीं है, तो इसको क्या simplify करें? So maybe there's some factorization possible और उसके बाद कोई cancellation हो जाए. So let's see. In the denominator we've got this quadratic expression. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इसकी midterm break देखें, हो सकती है 2 and 12 24 बनता है. कौन से दो factors हो सकते हैं 24 के जो subtract करके हमें 5 मिल जाए? So we have 8 and 3. 8 और 3 factors use कर सकते हैं यहाँ पे. उसको midterm break कर लिया हमने. 2y square minus 8y plus 3y minus 12. Similarly in the denominator we have v square minus 16. We can write that as v square minus 4 square. So that's a square minus b square wali form. Okay? Now we just simplify that. We get 2y into y minus 4 plus 3 into y minus 4. In the denominator we get v plus 4 multiplied by v minus 4. Simplify this further. We get 2y plus 3 into sorry v था वो, उसको हमने y लिख दिया. So this is all v there. Correct that. So this is 2v square minus 8v plus 3v. Here we have v minus 4 and v minus 4. This is 2v plus 3 and v minus 4 divided by v plus 4 into v minus 4. ठीक है, जो brackets cancel हो गए, v minus 4 and v minus 4, you're left with 2v plus 3 divided by v plus 4. That is our final result. ठीक है, pretty straightforward. Let's look at the next part. It says, solve this equation, show your working and give your answer correct to 3 significant figures. So when it says something like this कि आप इतने decimal places तक आंसर देना है, इतने significant figures तक आंसर देना है, that sort of gives us a hint कि यहाँ पे हमें quadratic formula use करना पड़ेगा, factorization possible नहीं होगी, because वो decimals में तभी of course mostly तब decimals में ही आंसर आते हैं. In fact, in all cases you get an answer in decimals.
अगर factorization possible नहीं हो तो. So what do we do here? We simplify this. ये हमें आ जाएगा 3x square plus 9 equals 11x. Let's take everything to the left side. We get 3x square minus 11x plus 9 equals 0. Now a is equal to 3, b is equal to minus 11, c is equal to 9. We just apply the quadratic formula. So x equals minus b. B की value क्या है? Minus 11. So remember the formula is minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So minus b, that's this minus 11 plus minus square root of, remember bracket में लिखना है हमेशा, minus 11 का whole square minus 4 into 3 into 9 whole divided by 2 into 3. Make sure you show this work. 11 plus minus square root of, अब 11 square minus वो कर लें, क्या आता है 121 minus 4 into 3 into 9, that gives me 13 inside. Bracket के अंदर हमारे पास आ गया 13 divided by 6. Now there are two possibilities, either 11 plus square root of 13, that is 3.6055, 3.6056 divided by 6. Either this is true, or we have 11 minus 3.6056 divided by 6. ठीक है, इन दोनों को अलग अलग evaluate कर लेंगे. 11 plus this divided by 11 plus square root of 13 whole divided by 6. This gives us 2.43, three significant figures. 2.43 और दूसरा रिजल्ट हमें क्या देता है? That's 11 minus square root of 13 divided by 6. That is 1.23. 1.23. So we get two answers here: 2.43 or 1.23. These are the possible values of x that satisfy this equation. Okay. All right. Let's move to the next question. So next we have this girl Anna who drives 45 kilometers to work each day. 45 kilometers distance travel करती है. One day she drives the first 25 kilometers at an average speed of 82 kilometers per hour. She takes 36 minutes to drive the remaining distance. Calculate her average speed for the whole journey. So पूरी journey की average speed निकालनी है. अब average speed का formula क्या होता है? That's distance, total distance divided by total time. ये होता है ना हमारे पास total distance over total time. Now we have the total distance given, or do we? We have 45 kilometers, the total distance given. That's the total distance. Now it says one day, on a particular day, she drives the first 25 kilometers. The distance हमें पता है यहाँ पे, by the way, the total distance is 45. अब time कितना है total? Let's look at that. So one day she drives the first 25 kilometers at an average speed of 82 kilometers per hour. Okay. अब first 25 kilometers उसने इस स्पीड पर ट्रैवल किया और बाकी जो है उसने 36 मिनट्स में ट्रैवल किया. ओके, हमें सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी का टाइम तो पता है, लेकिन हमें पहले पार्ट का टाइम नहीं पता. what we do is we find the time taken for this first part as well. ये क्या होगा? टाइम यहाँ पे we have the units correct already. This is in kilometers, this is in kilometers per hour, so we don't have to worry about that. We just have to apply the formula. That's time equals distance over speed. आपने अगर उसको किया हुआ है वो भी कर लें. That's speed equals distance over time. Speed equals distance over time, right? Speed कितनी है? That's 82. Distance कितना है? 25. Time taken आपके पास यहाँ से आ जाएगा. Time आ जाएगा 25 divided by 82, and that will give you something in hours. 25 divided by 82, that is 0.3049 hours. ठीक है, ये हमारे पास आ गया the time taken for
this first part of the journey. पहले part में इतना time लगा 0.3049 hours. अब दूसरे part में कितना लगा 36 minutes. अब ये minutes को भी आपको hours में convert करना पड़ेगा, ठीक है? 36 minutes जो है हमारे पास 36 minutes उनको hours में convert करने के लिए क्या करेंगे? Which is divided by 60. 36 over 60 ये हमें क्या मिलेगा? 36 divided by 60, that's going to be 0.6 hours. 0.6 hours. तो total time हमारे पास कितना हो गया फिर? The total time therefore is, इसको erase करते हैं, तो हम लिख देते हैं total time taken. So total time for the whole journey, that is 0.3049 for the first part plus 0.6. इनको add कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0.9049. This is the total time taken for the journey. अब total average speed क्या होगी? The average speed is just going to be the total distance traveled. The total distance traveled was 45 divided by the total time, that's 0.9049, and that will give you that average speed. ठीक है? अब देखेंगे आपके पास क्या आता है. This turns out to be 45 divided by 0.9049. That is 49.7 kilometers per hour. We say 49.7 kilometers per hour. That is the average speed for the whole journey. Okay. Let's look at the second part of this. Second part में वो क्या कहता है? Anna's journey home is 47 kilometers. Correct to the nearest kilometer. One day, her journey home takes 65 minutes. Correct to the nearest 5 minutes. Achha. Let's think about this. 47 kilometers, correct to the nearest kilometer. On a particular day, her journey takes 65 minutes, correct to the nearest 5 minutes. Okay. Calculate the upper bound of her average speed for the journey home. Okay. अब देखिए उसने आपको दोनों values to the nearest something दी हुई है. So 47 is given to the nearest kilometer. इसका मतलब क्या है? जो असल value है यहाँ पे, remember हम क्या करते थे यहाँ पे nearest 1 kilometer है ना यहाँ पे, so we divide 1 by 2. जो असल value है इस distance की, that is 47 plus minus 1 over 2. Right? जो भी आपके पास यहाँ पे होता था उसको divide by 2 कर दें. So असल में जो वैल्यू है ये आपके पास आ रही है 47 plus minus 1 over 2. तो क्या मतलब है? ये वाली वैल्यू जो है this is somewhere between 46.5 and 47.5. इन दोनों के दरमियान में ये कहीं पे वैल्यू आएगी, राइट? तभी वो राउंड ऑफ होके 47 हो जाएगी, राइट? इससे बाहर होती कहीं पे तो वो राउंड ऑफ होके कहीं और चले जाती, that would not become 47. अच्छा, एक तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया. The distance is some value between 46.5 and 47.5. ठीक है? इसी तरह यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखें जहां पे हमारे पास टाइम दिया हुआ है. Now the time is 65 minutes. ठीक है? 65 minutes correct to the nearest 5 minutes. अब to the nearest 5 minutes का क्या मतलब है? 5 को 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, that is the error that's possible. That's 2.5. तो जो असल टाइम है हमारे पास इस केस के अंदर, that is 65 plus minus 5 over 2. ये आपके पास आएगा 62.5, the lower bound for that, and 67.5, that's the upper bound for that. So basically जो आपका टाइम है that can be anything between 62.5 and 67.5. इन दोनों के दरमियान में कहीं पे भी हो सकता है. Does this make sense to everyone? ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस और टाइम की बाउंड्स हमारे पास क्या है? ये कह रहे हैं? Okay. Now we have to find the upper bound of the average speed. Upper bound of the average speed. Average speed का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? Average speed is total distance
divided by total time. अब इसकी हमें upper bound चाहिए, इसकी maximum possible value. Upper bound का मतलब क्या है? इसकी maximum possible value क्या हो सकती है, right? Now what do you do for that? Do you just take the maximum values here? Do you just take 47.5 and 67.5? Is that what you want to do? क्या करेंगे आप? एक तो इसको hours में convert करना है पहले, so that's of course important. So this is in minutes right now. इसको हम hours में कर लेते हैं. इसको अगर हम ये minutes में था, इसको अगर hours में convert कर लें, what do we get? 62.5 over 60. 62.5 divided by 60. That's going to be 1.04. So 1.0417 to 67.5 divided by 60. That is 1.125. So this is in hours. Okay. Now, what do we do for this? What distance हमारे पास kilometers में था, so that's fine. Do we just take the maximum values of distance and time? इनकी maximum values ले लेंगे यहाँ पे? क्या करेंगे? सर हम ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस का हम अपर बाउंड ले लें एंड टाइम का लोअर बाउंड ले लें, तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी. Yes sir. Why would we do that? ताकि हमारे पास अपर बाउंड आ जाए एवरेज स्पीड का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ सर जाए. अगर टाइम कम लगेगा ज्यादा डिस्टेंस कवर करने में तो उसको स्पीड कहेंगे. Exactly. Think about this. Think about the formula. Think about this formula that we have. Distance is in the numerator and time is in the denominator. तो basically speed आपकी ज्यादा कैसे होगी? Distance की value maximum होनी चाहिए. Distance की value ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. Time की value minimum होनी चाहिए. Denominator जितना छोटा होएगा उतनी ज्यादा आपकी speed आएगी. Right? Numerator बड़ा होना चाहिए और denominator छोटा होना चाहिए. Right? So that's the logic. Distance हम बड़ी वाली value लेंगे, that's 47.5. ये वाली value लेंगे. Time की हम क्या लेंगे? Smallest possible value, that's 1.0417. That's 1.0417. And that will give us something from here. 47.5 divided by 1.0417, and that is 45.6. 45.6 kilometers per hour. That is the upper bound for this. अगर उसने पूछा होता lower bound के लिए हम क्या करते? हम distance की minimum value लेते और time की maximum value लेते, right? Numerator सबसे छोटा हो तो आपका छोटा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फिर आपका ओवरऑल छोटा नंबर आएगा. ठीक है, डिनोमिनेटर को बड़ा करना चाहेंगे और न्यूमरेटर को छोटा करना चाहेंगे. ठीक है, ये क्लियर है? यस सर. ठीक है. Now the probability that Anna arrives at work on time or early on any given day is 5/8. Okay, so on time or early on any given day is 5/8. Calculate the probability that she is late on both Monday and Tuesday. Give your answer as a fraction. अब देखिए मंडे को लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब हर दिन की वो सेम ही प्रोबेबिलिटी, राइट? हर दिन में लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? So let's find the probability of being late. Probability of being late, that is 1 minus 5/8, है ना? Because टाइम पे होने की या टाइम से पहले होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? That is 3/8. Now the probability that she is late on both Monday and Tuesday, probability late on both days. So Monday को late होने की probability क्या है? 3/8. And being late on Tuesday multiplied by 3/8 again. That gives you 9/64. That's the result. 9/64. Monday को late होने की probability multiplied by the probability of being late. सर इसका सर ये नहीं समझ आया कि 1 माइनस हमने क्यों किया. अच्छा, उसने तो ये बताया होना है, उसने तो ये बताया नहीं हुआ कि मंडे ट्यूसडे के अलावा के दिन में जो ये वाले हैं 5/8 वाले, उसने एनी डे का है ना, बीइंग लेट ऑन. अच्छा नहीं आप उसको गलत बात समझ रहे हो. The probability that Anna arrives at work on time or early, यानी आप वो जो है वो ऑफिस में टाइम पे पहुंचती है, अर्ली पहुंचती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8. तो लेट होना क्या है? लेट होना इज ऑपोजिट ऑफ दिस. ऑन टाइम
हो और अर्ली नहीं है उसका मतलब आप लेट हो. लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ऑन एनी गिवन डे, दैट्स 3/8. किसी भी दिन पे लेट होने की प्रोबेबिलिटी इज 3/8. ओके, हमने क्या कहा, probability of being late on Monday, that's 3/8, and probability of being late on Tuesday, that's also 3/8. दोनों को multiply कर दिया, that's 9/64. Okay? Yes, sir. All right. Achha, now let's look at this. Question number 5. How long is this? Achha, let's do it in the next session, inshallah. I need to leave. Next session जो है कल हमारा थोड़ा सा लंबा आएगा. We will complete this paper tomorrow, inshallah. We have a total of how many questions? 10 questions. Okay, so we will do the rest of the 6 questions tomorrow, inshallah. Okay, tomorrow please try to be on time. 11 o'clock we will start, inshallah. Okay, I'll also post in the WhatsApp group the exact time. और कल भी Okay, हमारी sir. Zoom पे क्लास है, तो हम उसके बाकी 6 questions कल करेंगे, inshallah. ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Okay. Allah Hafiz for today. I'll see you again. Allah Hafiz.